Political concepts. Hello everyone, welcome back to the political science lecture series on near peer. In the previous lecture we discussed different forms of government, and today we'll be looking at the political concepts, and particularly we'll be looking at the notion of liberty and its safeguards. जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है उसको अक्सर फ्रीडम के साथ कन्फ्लेट किया जाता है, ऑल्दो टेक्निकली दे आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. एंड सेकेंडली इसको हम अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो इसमें सबसे पहले जो एलिमेंट है वो इसको आप योर एबिलिटी टू डू व्हाट यू विश टू डू. बट इन द पॉलिटिक्स, इन द पॉलिटिकल थॉट, लिबर्टी के अंदर सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम्स वो वाली इन्वॉल्व होती हैं जो आप दूसरे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ एंजॉय करते हैं. सो दीज आर द थिंग्स विच यू आर इंटाइटल्ड टू बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ सोसाइटी. सो दीज आर civic in nature. That is to say that you enjoy these freedoms by virtue of being part of a social group of a society. इसके दो essential elements हैं liberty के. The first is the absence of arbitrary restraints and the second is its responsible use under rule of law. The absence of arbitrary restraint के अंदर ये लफ्ज़ operative है, इसके अंदर बहुत important, the word arbitrary. Arbitrary means that something which is not defined, something which just happens by whim or just without any code of law. तो अगर एक किंग है और वो अपनी मर्जी से कभी भी किसी को सजा दे देता है जो उसका दिल चाहता है, तो हम कहेंगे कि किंग हैज एक्सरसाइज्ड आर्बिट्रेरी पावर. बट अगर एक जज ने लीगल प्रिंसिपल्स के तहत कोई डिसीजन दिया तो दैट इज नॉट द एक्सरसाइज ऑफ आर्बिट्रेरी पावर. सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट डिस्टिंक्शन बिटवीन द. सो लिबर्टी के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आई विल हैव माई लिबर्टी ओनली इफ देर इज नो आर्बिट्रेरी एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ माई लिबर्टी. कि कोई भी किसी भी वक्त अपनी मर्जी से मेरी लिबर्टी नहीं छीन सकता. और ये कोई भी से मुराद यहाँ पर हर किस्म के एक्टर है. इससे मुराद सोसाइटी है, इससे मुराद मार्केट है, मार्केट से मुराद इकोनॉमिक मार्केट, एंड इससे मुराद state भी है. So all no society, market or state can arbitrarily snatch my liberty away. But at the same time, it does not mean, the absence of arbitrary restraint does not mean that I can do whatever I wish to do and I can do whatever I like to do. That is not true. इसीलिए this the second principle, the second element of liberty becomes important, that liberty can only be exercised responsibly under rule of law. इसका मतलब ये है कि मेरी राइट टू लिबर्टी इज कंटिंजेंट अपॉन द एक्सरसाइजेशन ऑफ द सेम राइट टू लिबर्टीज ऑफ अदर्स. इसका एक और अंदाज कहने का ये होगा कि मेरी राइट टू लिबर्टी तब तक मेरे पास है जब तक उसको एक्सरसाइज करने से किसी और की राइट टू लिबर्टी इन्फ्रिंज नहीं होगी. सो फॉर इंस्टेंस आई हैव द फ्रीडम टू मूव माई आर्म, बट माई फ्रीडम टू मूव माई आर्म स्टॉप्स एट योर नोज, बिकॉज आफ्टरवर्ड्स मैं आपकी राइट या लिबर्टी टू बी प्रोटेक्टेड को वायलेट करूंगा अगर मैंने अपनी लिबर्टी एक्सरसाइज की. सो माई लिबर्टी इज लिमिटेड बाय योर लिबर्टी. तो दैट इज हेंस as long as my exercisation of my liberty is not depriving anyone else's liberty, I am entitled to that. So इसीलिए rule of law और लॉ ने जो restrictions, legitimate restrictions लिबर्टी पे लगाई होती हैं वो उसका पार्ट होती है. And that is why there is this distinction between freedom and liberty becomes very neat. फ्रीडम अगर हम ब्रॉडली बात करें इसका मतलब है टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. आपका जो करने का दिल करता अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो फ्रीडम है. बट दैट इज नॉट पॉलिटिकल लिबर्टी. पॉलिटिकल लिबर्टी विल ऑलवेज बी चेक्ड बाय दिस वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि क्या उसको इस्तेमाल करने से क्या आप दूसरों की लिबर्टी तो लिमिट नहीं कर रहे. इसीलिए जैसे एक बड़ी सिंपल एग्जाम्पल इसके अंदर है दैट फ्रीडम टू मर्डर, anyone has a freedom to murder, but you do not have a liberty to murder, because otherwise you are depriving other one's right not to be harmed, and you are depriving them of their right to life. So for this reason, this idea of liberty is very much contingent upon the fact कि overall society की liberty protect होगी. इसीलिए कहा जाता है कि liberty by an individual is enjoyed in common with other people. कि लिबर्टी कभी भी इंडिविजुअली आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, वो कम्युनल एक्सरसाइज हो रही होती है. बिकॉज मैं सिर्फ वो वाली लिबर्टीज एंजॉय कर सकता हूँ जिनकी एक्सरसाइज करने से दूसरों की लिबर्टीज हर्ट ना हो रही हो. और ये जो लफ्ज़ है लिबर्टी का, ये तारीख में बहुत अहम इसने किरदार अदा किया है. इस लफ्ज़ ने, इट हैज़ बीन अ बज़वर्ड
फॉर मेजॉरिटी सोशल मूवमेंट्स, इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स, डिकोलोनाइजेशन मूवमेंट्स और वो तमाम मूवमेंट्स जो अथॉरिटी के अगेंस्ट या लोगों को एम्पावर करने के लिए दुनिया में चली हैं, उनके अंदर ये एक बड़ा पॉपुलर स्लोगन और यूज्ड टू बी अ रैलिंग क्राई for all such movements and revolutions. Very famous example is the American Declaration of Independence. Declaration of Independence was issued in 1776, American Declaration of Independence from the Great Britain. उसके अंदर बड़ा important ये document का मैंने जो cross section लगाया हुआ है, we hold these truths to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed with certain inalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. तो ये थॉमस जेफरसन ने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन. इट वाज inspired from the works of John Locke. John Locke ने भी right to life, liberty and property were the three cardinal rights in John Locke's book The True Treatise on Government. तो उसका रेफरेंस भी आप अपने क्वेश्चन के अंदर डाल सकते हैं. लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, these are the French words for liberty, equality and fraternity. ये वाले तीन अल्फाज फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्होंने रोल प्ले किया. तो इन दिस सेंस these are two important examples of how liberty and its ideals have been used as a essential principle for movements for democratization, for independence, for resistance to state authority. The next important topic is that the two types of liberties generally. वो political science के अंदर हम लोग इसको different तरीके से interpret करते हैं, but the kind of interpretation that I am using for the two concepts of negative liberty and positive liberty is from the book Liberalism, the Life of an Idea by Edmund Fawcett. He's a great liberal thinker of 21st century, a brilliant writer, and in this book he has traced how liberalism has evolved philosophically, how it has translated in political theory, how it has translated into action by different liberal politicians and statesmen. तो उसके मुताबिक नेगेटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उससे मुराद रिमूवल ऑफ फॉर्मल रिस्ट्रेंट्स है. रिमूवल ऑफ फॉर्मल रिस्ट्रेंट से मुराद ये कि मेरी लिबर्टी के ऊपर कोई एक्सटर्नल लिमिटेशन लीगल नहीं इम्पोज की जाएगी. सो फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी को राइट टू वोट नहीं देते, जैसे बिफोर सफरेजिस्ट मूवमेंट 1920 से पहले 1920 में औरतों को राइट टू वोट मिला इन द यूनाइटेड स्टेट्स. सो बिफोर 1920 औरतों के पास नेगेटिव लिबर्टी नहीं थी इन दैट सेंस कि स्टेट ने रोका हुआ था रास्ता औरतों की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए, बिकॉज एक फॉर्मल ऑब्स्टिकल था उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर, दैट दे वर नॉट ग्रांटेड द राइट टू वोट. So negative liberty entails, hence the name negative, that you take away all the formal restraints in the path of individuals. So when women were granted the right to vote in 1920, वो legal obstacle और formal restraint उनके रास्ते से हटा दी गई. So that's the concept of formal negative liberty. In this, when negative liberty is granted, state acts as a passive actor. That is to say that state does not interfere a lot in your affairs. So जैसे 1920 में जब औरतों को राइट टू वोट दिया रियासत ने, उसके बाद रियासत खुद नहीं कहती थी कि आप इलेक्शन लड़ें औरतों को, कि आप ज़बरदस्ती उनसे इलेक्शन लड़वाना, या इंटरवेंशन नहीं करती थी, बस एक राइट टू वोट दे दिया एंड देन इट वुड लीव द अफेयर्स टू द इंडिविजुअल्स टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स व्हाट दे वांट टू डू, whether a woman wants to vote or not, or she wants to hold a public office or not, in this particular example. तो पहली चीज़ ये होगी. दूसरी है पॉजिटिव लिबर्टी. पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट ये है कि कभी कभी रिमूवल ऑफ लिबर्टी इज नॉट इनफ फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट देयर आर सर्टेन इनफॉर्मल or historical causes of oppression and exploitation due to which a particular social group is not able to maximize its potential. अगर हम इसी औरतों की बात ही करें तो 1920 में औरतों को राइट टू वोट तो मिल गया, जैसे पाकिस्तान में भी औरतों को राइट टू वोट मौजूद है, लेकिन हम जानते हैं कि पेट्रियार्की होने की वजह से, जेंडर स्टेरियोटाइप्स होने की वजह से, जनरली लोअर सोशल इनकम होने की वजह से, कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से औरतें पॉलिटिक्स में उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर सकती जिस तरह मर्द करते हैं. उनके लिए पब्लिक ऑफिस होल्ड करना उतना आसान नहीं है, पॉलिटिशियन बनना ज़्यादा मुश्किल है, इलेक्शन लड़ना ज़्यादा मुश्किल है. तो स्टेट ऐसी हालत में क्या करती है कि इंटरवीन करती है और एम्पावर करने के लिए स्पेशल कंडीशंस उनके लिए क्रिएट करती है, और इसके अंदर स्टेट एक एक्टिव एक्टर के तौर पे एक्ट करती है. पॉजिटिव लिबर्टी की एक मिसाल अकॉर्डिंग टू फॉसेट इज द आइडिया ऑफ अफर्मेटिव एक्शन. अफर्मेटिव एक्शन पॉजिटिव लिबर्टी की एक मिसाल है, जिसमें फॉर इंस्टेंस अगर हम औरतों की मिसाल लें पाकिस्तान में, तो कोटा जो
दिया जाता है, जेंडर कोटा. So not only there is right to vote for women in Pakistan, which is the negative liberty, but there is also gender quota for women in Pakistan for their fixed seats on National Assembly. और उसके अंदर आपने उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे दी कि वो उस कोटे पे इलेक्ट होकर आ सकती हैं विदाउट कंटेस्टिंग द इलेक्शंस. तो इसमें आपने एक्टिव एम्पावरमेंट के लिए इंटरवेंशन करके उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश की. सो दीज आर द टू slightly more nuanced concepts than what the conventional understanding of liberty is, and this particular contextual understanding is derived from the book that I've given here as a reference, जो कि आप पेपर में कोट कर सकते हैं. और it's very important and it's very recommended कि आप इस तरह की references कोट करें. It gives an impression कि आप subject पे command रखते हैं और authority रखते हैं. The next important concept is which has been asked in the past papers as well, discuss liberty and its safeguards. हमने definition और उसकी थोड़ी discussion अभी की है. हम उसके safeguards discuss करेंगे. Safeguards से मुराद वो चीज़ें हैं कि which are very important for the protection of liberty. कि अगर हम चाहते हैं कि society में protection हो negative आपकी liberty की जनरली, तो उसके लिए कौन सी safeguards required हैं? So there are numerous safeguards. There is love for liberty, eternal vigilance, equality, democratic system, constitutional protection of human rights, separation of powers, decentralization of powers, rule of law, and active civil society. तो अब हम इनको बारी-बारी go through करते हैं. So the first is the love for liberty. It's very important that people must themselves hold liberty important. So cultural values play a significant role on the political values of a society and the political system of a society. So अगर एक society के अंदर लोग अपनी liberty को value करते हैं, तो automatically it's a very important chain, right? Because in democracy के अंदर in particular, people are supreme and hold sovereign power. वो वोट करके लोगों को पावर में लेकर आते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव लॉज बनाते हैं और वो लॉज इन टर्न लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं लोगों की. तो अगर लोग लिबर्टी को इम्पोर्टेंट समझेंगे तो वो वोट उन लोगों को देंगे जो लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे और वो लोग आके फिर वही ऐसे लॉज बनाएंगे जो लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे. So the classical example here being the Western liberal democracies, where people generally regard their freedoms and liberties very important, and whenever there is an infringement upon their liberties, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वावेला मचाया जाता है, उसके ऊपर प्रोटेस्ट किए जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें की जाती हैं. So the first thing is that liberty को important समझा जाए लोगों की तरफ से. Second is eternal vigilance. There is this quotation, very famous one, that vigilance is the price of liberty. कि आपको कांस्टेंट इवैल्यूएशन करनी है गवर्नमेंट की, उस पर नज़र रखनी है. यू हैव टू एक्ट एज अ वॉच डॉग, एंड दिस विजिलेंस वुड कम फ्रॉम पीपल, इट वुड कम फ्रॉम मीडिया, इट वुड कम फ्रॉम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस. बट टू कीप गवर्नमेंट इन चेक और उस पर नज़र रखना और उस पर तनकीद करना और उसको ये सारी चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं रियासत अपनी पावर को एब्यूज़ करते हुए लोगों की लिबर्टीज़ वायलेट तो नहीं कर रही. Third thing is equality, and this concept is slightly nuanced. It's said that there can't be liberty without equality. कि अगर एक सोसाइटी में इनक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है, अगर एक तरफ बहुत अमीर तबका है और एक इंतहाई गरीब तबका है, तो इवन दो गरीब बंदे को लिबर्टी है टू कंटेस्ट इलेक्शंस, बट विल ही बी एबल टू? He will not be able to, because he doesn't have the resources to contest election. He does not have the basic necessities of life. और कोई भी बंदा अगर उसे मैन्यूवर कर सकता है, उसको वो वोट बेचने पर मजबूर हो जाएगा, वो उसको कोई पैसे दे के खरीद सकता है वोट देने के लिए, तो वो अपने राइट टू वोट भी सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर सकता if he is living in abject poverty. So gross inequalities do not make a conducive environment for the protection of liberty. So the removal of mass level inequalities or gross inequalities is very important, and the creation of equal systems is important to protect liberty. The fourth is democratic system. Democratic system liberty की protection के लिए सबसे important है, because democratic system tends to be more liberal. इसके अंदर ज़्यादा accountability होती है, क्योंकि constant cycles of elections होते हैं और उस elections के ज़रिए अगर कोई भी लोगों को oppress करता है, कोई exploit करता है, तो लोग उसे vote out कर देते हैं. And there are other multiple levels of accountability of the opposition. होती है, अगर एक गवर्नमेंट गलत करती है तो ऑपोजिशन उस पर उसको अकाउंटेबल ठहराती है. तो इन सब चीज़ों की वजह से डेमोक्रेटिक सिस्टम्स आर मोर अकाउंटेबल, दे आर मोर कंड्यूसिव फॉर लिबर्टी.
The fifth is, and by the way इसके अंदर आप एज एन एग्जाम्पल इजीली कोट कर सकते हैं कि वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज हैव मोर फ्रीडम्स, मोर राइट्स, मोर लिबर्टीज एज कम्पेयर टू द मोनार्कीज जो है दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर, यहाँ अदरवाइज तो वहाँ पर राइट्स और लिबर्टीज एज सच एग्जिस्ट नहीं करते. The fifth is the constitutional protection of fundamental rights. This is very important in the protection of liberty because जो constitutional provisions होती हैं they are enforceable in courts. तो वो provisions जो कि कॉन्स्टिट्यूशन इंश्राइन करता है, अगर स्टेट या कोई दूसरा बंदा वायलेट करता है तो द एग्रीव पार्टी कैन टेक द एक्यूजर्स टू द कोर्ट एंड देन फोर्स देम कि वो कोर्ट फिर उनके फैसला हक में डिसीजन देती है. सो अगर कॉन्स्टिट्यूशनली फंडामेंटल राइट्स इंश्राइन हो तो उसका फ़ायदा ये है कि एग्रीव पार्टी कोर्ट में जाकर अपना रिड्रेस करवा सकती है और अपनी लिबर्टी को रिस्टोर करवा सकती है. प्लस अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स इंश्राइन है तो फिर रियासत को एक फोर्स्ड किया जाता है, रियासत को कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स डायरेक्शन देता है कि आपने फंडामेंटल राइट्स और लिबर्टीज़ लोगों की लाजमी प्रोटेक्ट करनी. Separation of powers and the independence of judiciary is also very important because again वो जो हमने पहले भी principle discuss किया था, because of separation of powers, power is not concentrated in one organ, वो डिवाइड रहती है पावर तीनों ऑर्गन्स के अंदर, जिसकी वजह से नो वन ऑर्गन इज टू पावरफुल दैट इट अब्यूजेस इट्स पावर इन इट्स ओन इंटरेस्ट टू ऑप्रेस पीपल एंड सप्रेस देयर लिबर्टीज. तो इस वजह से लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी आपस में सेपरेटेड रहती हैं और एक दूसरे पे चेक के तौर पे एक्ट करती हैं. बट सेकेंडली द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बिकम्स इंपॉर्टेंट इन दिस बिकॉज अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो ही वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शंस कर सकती है. अगर जुडिशरी इज इन्फ्लुएंस्ड और जुडिशरी इज कंट्रोल्ड बाय लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव तो वो फिर लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव के हक में फैसले करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे एंड हेंस फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टीज विल नॉट बी प्रोटेक्टेड. द सेवंथ इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और इसमें द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म इज इम्पॉर्टेंट. दैट फेडरलिज्म इसीलिए मॉडल बनाया जाता है और पावर डिसेंट्रलाइज की जाती है प्रोविंसेस को, लोकल गवर्नमेंट्स में और नीचे, ताकि पावर एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट ना रहे, जिसकी वजह से आपका एक सेंटर आपका इतना मजबूत हो जाए कि वो लोगों को बाकी पेरिफेरीज की या दूसरे एरियाज़ की राइट्स और उनकी लिबर्टीज़ और उन चीज़ों को ओप्रेस करना शुरू कर दे. तो दैट इज़ वाई डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर is also consistent with this principle of separation of powers. जो separation of powers में भी आइडिया ये है कि आप पावर एक्यूमुलेशन को मिनिमाइज करते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का भी आइडिया ये है कि आप टॉप टू बॉटम पावर डिवॉल्व करें ताकि कोई एक ऑर्गन ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए. रूल ऑफ लॉ is the idea that everyone is equal before law. अगर रूल ऑफ लॉ किसी कंट्री में नहीं है इसका मतलब है कि access to justice is a privilege and if access to justice is privilege is not available to everyone, this means there can be no liberty. Because अगर rule of law नहीं है तो इसका मतलब a powerful person can snatch my liberty and get away with it. But if there is rule of law then it would mean कि अगर कोई पावरफुल आदमी, अमीर आदमी भी मेरी लिबर्टी को एक्सप्लॉइट करता है तो उसके खिलाफ फैसला भी आएगा और रियासत उसके खिलाफ एक्शन भी लेगी और मेरी लिबर्टी को फिर और ये एक डिटरेंस मैकेनिज्म क्रिएट करेगा और कोई किसी की लिबर्टी क्वेल नहीं करेगा. लेकिन अगर एक माशरा ऐसा है कि कोई भी पावरफुल आदमी किसी के साथ ज्यादती करके उसकी लिबर्टी वायलेट करके एंड कैन गेट अवे विद इट तो फिर ज़्यादा बहुत सारे लोग इस तरह करेंगे और पावरफुल लोग ये बार बार करेंगे एंड दैट इज़ वाई इन सच अ सोसाइटी लिबर्टी कैन नॉट एग्जिस्ट. So rule of law is sine qua non for liberty. Last is the presence of active civil society groups and non-governmental organizations. Non-government organizations, civil society groups are very important agents of protecting liberty because वो they do advocacy, वो litigation करते हैं, लोगों के behalf पे pro bono cases लड़ते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं, वो इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करते हैं, वो ये सारी चीज़ें बिल्ड करती हैं कि लोगों की फ्रीडम्स और प्रोटेक्शंस, राइट्स जो हैं और लिबर्टीज़ जो है ना उनकी प्रोटेक्ट रहें. सो दिस इज़ अ फीचर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड दैट दिस राइज ऑफ सोशल जस्टिस मूवमेंट्स. आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल है, यू हैव ओपन सोसाइटी फाउंडेशन एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच force governments to protect freedoms of their individual citizens, liberties of their citizens, rights of their citizens. और आपकी नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो इस किस्म की प्रो लिबर्टी मूवमेंट्स जो हैं वो रन करती हैं. सो इन जनरल ये सारे आपके सेफ गार्ड्स लिबर्टी के बनते हैं. और हमने इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने देखा कि एक्यूमुलेशन ऑफ पावर अगर होगी एक ऑर्गन में या एक इंडिविजुअल में या एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में तो लिबर्टी वायलेट होती है. इसलिए देयर शुड बी power should be broadly distributed between different sections in society. It should not be accumulated ताकि liberties लोगों की violate ना हो. And
as we have been progressing with the political science lecture, you're seeing this trend that how freedoms and rights and liberties are very important in the political thought of the philosophers, of the academics who have contributed to theory of political science. तो आज का लेक्चर को हम यहीं पे क्लोज करेंगे. I'll see you guys in the next lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.